हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल लर्निंग एक फ्रेश वीडियो को आप समस्त स्वागत। आज कोर्टर रिटन जजमेंट आसी जाइए जहाँकि जूनियर टीचर स्कीमेटिक को लेकिन कौन रही से जजमेंट रे चलतु पुखानुपुख आलोचना करवा। जजमेंट 50 पेज एक पीडीएफ टी तो संपूर्ण तथ्य आलोचना करने टी भिडटी लंग हो जापे। भिडटी को आप प्रथम शेष जाए कंप्लीट तथ्य कंप्लीट डाटा जानापी भिडटी को देखूँ। वीडियो आरंभ करने पूर्व कर रखा चाहूँ चैनल जब फर्स्ट टाइम अच्छे तो चैनल को सब्सक्राइब करनी। वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड मान सहित शेयर करेंगे। किसी डाउट थाए ताहले वीडियो तले कमेंट करेंगे। चलतु डेरी नक आरंभ कर सब देखो जो सब केस थी मर्ज होता से सब केस मर्ज होकर तार ऑर्डर कॉपी आसी। द ऑनरेबल जस्टिस सर बिरजा प्रसाद शतपथी कोर्ट रे था लास्ट हियरिंग आपंकर 31 तारिख में होता है। जजमेंट 12/3 होता। जजमेंट हबार आज आसी गोटे सप्ताह पाखापाखि हो गला। तो आज तार रिटर्न ऑर्डर कॉपी आसी। रिटर्न ऑर्डर कॉपी कहुई जेहेतु सब प्रकार केस गोटे प्रकार थिला से आपको मेन केस भाव में ट्रीट कर आगू नि आउ बाकी कौन लिखागला ना आमर कैटेगरी 1 एवं कैटेगरी 2 बोथ पेपर पर कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही है, कौ मैंने अप्लाई करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन से सब विषय एठारे डिटेल्स दिगला। देन कैटेगरी 2 पर दिगला। ओके, मेन जिनस आमर ये सेटा ना। मेन जिनस आम सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकिन जेहेतु ये चैलेंज कराइला तो सिलेक्शन प्रोसीजर ऊपर चलते जावा। डायरेक्ट कौन लिखाई देखो तो सिलेक्शन प्रोसीजर हिसाब से जमती आसीला सिलेक्शन प्रोसीजर आपंकर डिटेल्स आप मन थी जे पब्लिकेशन और मास्टर लिस्ट गोटे होता जो ऑनलाइन एप्लिकेशन सरीला फास्ट प्रिफरेंस पिलांकर नहीं गोटे मास्टर लिस्ट आसीला। से आम जापे केते एप्लिकेंट रहिले से फास्ट प्रिफरेंस कौन। देन आपणकर ऑनलाइन एग्जाम होता जहाँकि आपंकर 3 नवेम्बर आरंभ हो 17 नवेम्बर पर्यटन चली सीबीटी मोड्रे परीक्षाटी होता विभिन्न सिफ्ट्रे। यापर आमर डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट आसबार जहाँकि आपंकर जानुआरी 15 तारिख में ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट आसीला। एवं ए ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट आसला ही केस फाइल होता कारण ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट को कमती आसाला देखो केमती आसबार। डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी वाइज ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड इन OSEPA वेबसाइट। ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस submitted by the individual and in order of preference followed by the merit rank. Example, for a particular post, particular district, after existing all candidates are having first preference, subsequent preference will be considered in the case of tie when 2 or more candidates जहाँ भी लिखा था आपको सीधा उत्तर दिया जाए। फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट इन ए कैटेगरी विदिन डिस्ट्रिक्ट प्रिफरेंस विल प्रिफर ओवर मेरिट जहाँ भी आप रिजोल्यूशन से कथा ये लिखागला। ठीक सेमती रिजोल्यूशन जमी लिखा था जे जो ड्राफ्ट मेरिट आसीज तापर आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम ये सब जिनस रिजोल्यूशन जिनटा को ये लिखा जाए। काउंसिलिंग सर काउंसिलिंग सरला पोस्टिंग दिज्व किंतु ये जो जिनटा बता जाए से जिनटा मुझे देखा चलतु टिके रुहतु बताऊँ ये देखो तो कम्प्लेन थी कौन ना जो मेरिट लिस्ट बनी सेटा कि स्टेट बनी स्टेट रो टॉप पिला नहीं बना जाए ना कि डिस्ट्रिक्ट रो टॉप पिला नहीं बना जाए। से गवर्नमेंट कहला ना आम डिस्ट्रिक्ट हिसाब से बनईचु एवं से गोटे सील कवर रे कैंडिडेट देखो इफ द डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी वाइज लिस्ट वाज प्रिपेयर्ड एंड केप्ट इन ए सील कवर आफ्टर द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल कोर्ट इज नॉट अंडरस्टूड हाउ कुड द अपोजिट पार्टी नंबर 2 पैराग्राफ 5 ऑफ द एफिडेविट स्टेट that the document verification of 8,829 candidate of the category 1 was completed and 80 candidate has completed in 2। जदि तुम सील कवर देला ताले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केमिति हला से जिनसटा से पचार से जो लिस्ट भी देते सेटा से माने अपोजिट पार्टी नंबर 2 माने जे पिला माने ये करथिले से माने 24 तारिख दिन माने आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से माने प्रूफ देथिले जे ईडीसीएल जो इश्यू करछि से हिसाब रे एटा माने करि नहंती। ओके, माने से जो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन हेतला आपनकर माने तो ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट रे रोल नंबर थिला और सेठी एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट थिला। ए एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट नेम अनुसार माने सजाड चंजे ना कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन हिसाब रे करा जायछि। तो से कथा को जायथिला। ओके, से कथा कहगला गोटे आउ गोटे कथा उठी ए जो पिला माने दिखाई देखूँ ये लिखाई टू बी स्पेसिफिक जदि स्पेसिफिक कर एग्जांपल गिविंग एग्जांपल द डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट पब्लिश बाय OSEPA इन वेबसाइट एंड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट इज सील कवर लैंड काउंसिल अपेयरिंग फॉर द पिटिशनर कंटेंट दैट इन द डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट पब्लिश फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बालेश्वर एंड संबलपुर व्हिच वर डाउनलोड बाय द पिटिशनर 18/2024 इट फाउंड दैट कैंडिडेट गिविंग फर्स्ट प्रेफरेंस टू द अदर डिस्ट्रिक्ट हैव बीन एनलिस्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट लिस्ट ऑफ संबलपुर नॉट ओनली दैट इन द डिस्ट्रिक्ट लिस्ट published Kalahandi district as well Gajapati candidate who have never
नेवर प्रिफर गजपति एज देयर फर्स्ट प्रिफरेंस डिस्ट्रिक्ट फाउंड प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गजपति गजपति फर्स्ट प्रिफरेंस देना किंतु गजपति पाई कलाहांडी देना कलाहांडी पाई ये सब से एग्जांपल रखी टेकिंग क्यू फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट पब्लिश बाय ओसेपा आफ्टर पासिंग द इंटरिम ऑर्डर बाय द कोर्ट Learn Council appearing the petitioner brought the notice of the court the district wise list published in the category 1 for the district of Sambalpur content that the candidate number would example देले 76 having first preference for झारसुगुड़ा रे first preference देकी से संबलपुर रे पाइचंती but his name was reflected in the district of Sambal similarly in the respect of district published in the district Kalahandi candidate answer number G candidate placed in 10th serial number 10th his preference was Baleshwar and candidate placed in number 11 his preference is Keonjhar as per the verification conducted by petitioner and so enclosed से जोड़िकी से देते जो मानकर प्रिफरेन्स अलग डिस्ट्रिक्ट अच्छे से अलग अलग जगह पाई तो से स्टेट सिलेक्शन होती प्रमाण करें जोटा कि गवर्नमेंट मना करूला ओके प्रमाण सरला गवर्नमेंट ताको देखिले गवर्नमेंट देखला बर्तमान प्रमाण हो गला गवर्नमेंट जोटा कर स्टेट सिलेक्शन कर आसला केस आगू बढ़ला गवर्नमेंट कहले जे आमे मेरिट को लेकर करूँ ओके तापर से तार विभिन्न प्रकार जजमेंट एनक्लोज कर गवर्नमेंट साइड रू को बेंच रे कौन कौन होती से जजमेंट हाईकोर्ट देखिले देखला ऑर्डर कौन पास होती आपन तो जानते ठीक भाव में ओके आपन देखा It is also contain the details of candidate, their application number, roll number, category post, stream and allocation of district published by notice number एति 15 तारिख आसला इन OSEPA website remain unchanged in the preset district wise category wise that merit list published for each 30 district and produced in sealed cover before the court for better appreciation. It is also contained that for each that 30 district while published in district wise category that merit list cut off mark was mixed up fixed for each district none for the petitioner who have given first preference आज नवरंगपुर और मालकानगिरी से समस्त कटअपटा रहा कि जो मैंने पिटिशनर अच्छा ओके ये किसी कहता लर्न एडवोकेट जनरल कंडक्ट दैट सिंस द रिक्रुटमेंट इन क्वेश्चन टू फिल 20,000 पोस्ट फॉर जूनियर टीचर स्कीमेटिक एंड द पोस्ट 9,982 candidate in category 1 and 8,806 candidate in category 2 selected when different district of the state candidate also selected will be seriously prejudiced if the state is not permitted to proceed with the selection process. प्रिजुडिस अच्छी सिलेक्शन प्रोसेस रे आगो को जाई परिबो नाही तापरे आ गोटे पॉइंट आसिला आपन देखै दउचे देखंदो गवर्नमेंट तापरे तांक तरफ कहले टू सम ऑफ द सबमिशन ऑफ लर्न एडवोकेट जनरल कंटेंट दैट सिंस द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल अपेस कोर्ट इन द केस गोटे केस रो से रेफरेंस देतले कैंडिडेट विथ हायर रैंक इन मेरिट हैज बीन सिलेक्टेड एंड एनलिस्ट इन द ड्राफ्ट रिजल्ट शीट्स तो ये से कहले जार अधिक मार्क अच्छे सी ड्राफ्ट शेष फर्दर पब्लिश द सेकेंड देयर नेम इन डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी वाइज लिस्ट फॉर इच 30 डिस्ट्रिक्ट नो irregularity can found with the regret placement of the candidate in draft merit list कौन सी irregularity है बोली से कहले तापरे unnecessary in the district and category list of 30 districts so produced before the court in silk it also contained that out of 20,000 vacancy notified 18,778 candidate category 1 and shortlisted while publishing draft out of those 18,778 candidates enlisted after verification of the document verification of document after document verification केते पिला रही जाइतिले 2021 रे डॉक्यूमेंट हला परे 16,217 पिला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिथिले आ बाकी पिला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करि नथिले बा एब्सेंट थिले तो 16,217 पिला भितरु एनआईएस पिला भी रहुचंती ओके जो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करथिले ओटीटी क्लियर नथिया पिला माने दुनिया जो मैंने इलिजिबिलिटी नै से माने भी एथिरे थिले तो एटी गवर्नमेंट कहला candidate have attend document verification in different district headquarter after filling of those 16,217 as against the remaining vacant post एटा टिके मन रखंतु as against the remaining vacant post petitioner present bench of the petition can consider subject to their eligibility जदि तांकर eligibility रहुची ताले जति पोस्ट फांका अछि तो आमे vacant post तांकु जॉब दे दो बोली गवर्नमेंट साइड रो गवर्नमेंट एडवोकेट ए जिनसटा कहि थिले एटा लाउड मेन कथा तापर टू सबमिशन मेड बाय लिन एडवोकेट जनरल काउंसिल अफेयरिंग फॉर द पिटिशन कंटेंट दैट सिंस द ड्राफ्ट शीट पब्लिश आफ्टर एनएसएस 6 section list district wise segregated names draft list itself and it only attend final after completion of the process and para 8.4 and to 8.7 जेतल सरीबो से फाइनल ऑफ द सिलेक्ट कैंडिडेट whose name appear in the draft result sheet published under the list are not necessary party to the read petition
Since the prior publication the final list in term of the provision contained para 8.6 of the resolution, all these writ petitions include the present one has been filed challenging the publication of that result sheet without complying provision contained under para 8.3 of the resolution stand taken by the law channel. The selected candidate whose name appear in the draft result sheet under ethici not applicable to fact the present case or present bench have been filed against the draft list which has not attended finally. It accordingly contains the name those candidates which appear in the draft list published under ethici. So all the district category and 30 district are neither necessary not properly producing. तो किसी दरकार नहीं बोली से कहते मेरिट हिसाब से आउ ए कविता जेनार केस जो रेफरेन्स देते आपको कहले जे या सहित जूनियर टीचर कौन संपर्क ना बोली हाईकोर्ट कहते लास्ट को देखते कौन भर्डिक्ट रहा आपको जन दूसरी शेष को भर्डिक्ट या रहा देखो लास्ट को कौन लिखले द स्टैंड टेकन बाय द लॉ एडवोकेट जनरल दैट मेरिट इज द सोल क्रिएशन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द टीचर दैट हैज बीन फॉलोड इज नॉट एक्सेप्टेबल. मेरिट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द अंडर प्रोविजन कंटेंट अंडर पारा 8.3 रिजोल्यूशन 8.3 सारे मेरिट को जो मुख्य भाव में निया नहीं. Taking into the submission of the learned advocate general that the list of successful candidates have been prepared taking into account their performance and merit, it can be interpreted that the stipulation contained in para 8.3 resolution has not been followed. Since the provision contained under para 8.3 is very specific, selection of candidate only based on their merit irrespective of their preference given for the particular district is not sustainable in the eye of law. This court accordingly inclined to quash the draft list. This court accordingly leans to quash the draft result sheet published under Annex 6 and so all the district categorized draft list of each 30 district. The list which produced before the court is silver while the quashing the list in question. This court direct to opposite party number 3 to prepare district wise and categorize draft merit list strictly in term of the provision contained under para 8.3 of the resolution dated by CR 2023 under Annex 1. After such publication of district wise categorized list, party number 2 shall produce with the selection in term of provision contained under para 8.4 and 8.5 prior publishing the district wise final merit list as provided under para 8.6. On such publication of district wise categorized draft merit list in term of provision content under para 8.3 as directed, the candidate whose name will be there from out of this list published by segregating the name from the list of publication under 8.6. They may not ask to go document verification as in term of the interim order passed by the court. The verification of document such candidate has already been completed. However, by fixing another date for both category 1 and 2 verification of the document of the rest candidate will be made and thereafter the selection process will completed in term of provision content para 8. The court accordingly disposed the present batch of writ petition and तो एठू आम एक कथा जानिले जे एठी डायरेक्ट कोर्ट लिखिले लास्ट को आपण देखिबे एठी लिखिले जे द स्टैंड टेकन बाय द लैंड काउंसिल एडवोकेट जनरल मेरिट इज सोल क्रिएशन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द टीचर दैट has been followed is not acceptable. मेरिट ओनली एक्सेप्ट करा जीव नाही कारण रिजोल्यूशन 8.3 रे लिखा नाही. रिजोल्यूशन 8.3 रे जो प्रिफरेंस लिखा है प्रिफरेंस प्लस मेरिट नॉट ओनली मेरिट से जिनसटा कोर्ट ना कोर्ट बुझिले तो से अनुसार ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट को कैंसिल कर दिया जाइए. तो ये जो ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट जो पिला माने स्थान पाई से माने नुआ आ गोटे ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट जदि आउ थे स्थान पाते से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करार कौन आवश्यकता ना. जो पिला माने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना नुआ मेरिट लिस्ट रे आउ थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे. यह कंप्लीट ऑर्डर कॉपीटी जहाँकि आपन सहित आम डिस्कस कलु. जदि किसी डाउट थाए आप कमेंट रे पचारि पारे आम आपन को उत्तर देबू. देन बाकी रहा 20K फिलअप हम कि ना तो सेटा नुआ मेरिट लिस्ट आसला पर जना पड़ो कारण ये गोटे लिखा जाइए तार एजुकेशनल एलिजिबिलिटी हिसाब से जदि मेरिट लिस्ट बना जाए ताले एनआईएस एरिगन को नियाजिबो नहीं कारण एलिजिबिलिटी हो ना. देखा जाओ ओसेपा किपरि भाव में नुआ मेरिट लिस्ट बनाऊँच. नुआ मेरिट लिस्ट जदि 20,000 पदवी पूरण हिसाब से हुए तो अधिका पिला नहीं सी मेरिट लिस्ट आसब. आगामी दिन में जहाँ भी जूनियर टीचर रिगार्डिंग अपडेट थी आम आपको आम चैनल माध्यम देदेबू. दयाकोरी आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखु एवं बेल आइकन को अपडेट कर रखु. धन्यवाद.